In 1947, the British left India and divided it into a Hindu-majority India and a Muslim-majority Pakistan. Now, I grew up in America, so in school, the story of this event was usually about 1 or 2 paragraphs in our world history textbooks about Gandhi and nonviolence. But I had come to America with my grandmother, and my grandmother was always a remarkable storyteller, and through her storytelling, at some point as a teenager, I realized that this event was very important to the story of our family. I'm making this video to tell that story, preserve it, and pass it on to the next generation. I want to start the story with the interview I did with my grandmother a number of years back. So an important thing to know is that my grandmother was a Hindu in what became Pakistan, and she was living in a town called Quetta, which at this point, if you look at a map, is deep in Pakistan, almost close to Afghanistan. My grandmother was a seamstress, and she would sew buttons onto clothing for a penny a piece. And before the partition happened, she had just bought this sewing machine that was really close to her heart. Machine de do ek. कहते तैਨੂੰ मशीन तो तैਨੂੰ चलाना नहीं आता तू मशीन की काम करेंगी तो मैं मशीन उन्होंने को मंगी कुछ उन्होंने अपने को पैसे पाए सिंगर दी मशीन सी बड़ी है जब पाकिस्तान बन गया सारा कुछ चला गया देख कोई बंदे भी अच्छे भी होंगे हैं मुसलमान दोस्त थी उन्होंने भी साड़ी चीज़ां हड़प नहीं करियां एक ट्रंक ले आई एक होर ट्रंक ले आई उत्तर जाके जिसे लैंड पार के करन लगे मुसलमानों ने घेर लिया उस वेले भी तां मुसलमानों ने तंग करिया भी नहीं जा सकते तुसी भी निकलो मुसलमानों के पठाना दे देश जाएगा जाना पेगा एक डब्बा भर के सारा ले आए ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਛੋੜੇ ਆਈ ਲੈ ਬਈ ਉਹ ਮੈਂ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੁੱਟੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ So in this interview, my grandmother was not able to give perfect clarity on this part of the story. The reason my grandmother was able to escape Pakistan was because my grandfather had a job in the railroads. Being Hindus, my grandparents and their kids fled Pakistan to India in the cargo compartments of the trains. But at that time, things were pretty crazy. My grandmother was not able to take many of her things. And most of all, she wasn't able to take her sewing machine. So she had to leave a lot of her things at a neighbor's house in Pakistan who was a Muslim but was a good friend of hers. So when she got to India, she realized that she really wanted her sewing machine. So without telling her husband and leaving her kids behind, she decided she was going back to Pakistan in the middle of a war to get her sewing machine. So somehow, she was able to make it back to Pakistan and find her neighbor's house and get her sewing machine. So then when it comes time to go back across the border to India, she was stopped by a group of Muslim gangs, and they told her she couldn't take all this stuff with her, and she had to give her sewing machine up. And she said, "No, I'm not giving you my sewing machine." And my grandmother, by the way, is like a 4'10" Punjabi lady, but generally fearless. So as best she could, she was defending herself and her sewing machine against this Muslim gang at the border of India and Pakistan. But luckily it didn't take long for a group of Nepalese police or Gurkha warriors to come and save her from these Muslim gangs, get her across the border safely and to her new home in India. And that is the story of my grandmother's sewing machine. दिल्ली में आके एक जगह पे तंबू लाए तंबू उतार देते फिर ਅਸੀਂ उसी जगह पे पहाड़गंज की जगह ढूंढ के बैठे आशा था छोटी दी सी 1 साल दी ਨੂੰ मैं लेके आई हैं उस वेले पाकिस्तान से 1 साल दी थी आशा पैदा हुई उस वेले काका बड़ा सी मेरा. This 1-year-old girl, Asha, is actually my masi, or my aunt. Recently, she was in India, and I decided to tag along to have her show me Paharganj, which to me is a foreign place, but to her and my grandparents, that's where they lived as refugees after Pakistan. There is a place where we lived, where Ravi was born. Ravi was born in that hospital, so we lived for 10 years over there. Then we came from Pakistan. This was the school where I studied first class. Look at this. This was the school. This is the school where you studied first grade. First grade, right? Yeah. Where, this is it? Now that it is broken, something I don't think this. Maybe I don't know. Ask him.
पुराने रहंदे होने? हाँ जी बिल्कुल जी। किन्ने पुराने? हाँ जी किन्ने पुराने? साड़ी बेला जाती जाएगी। साडी भी इत्थों दी है, ताही करके मैं इहनूं देखण आई हां जगह नूं। देखो जी मैनू ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਸ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਹਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੈ ਰਾਮਨਾਥ ਪਟਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਦੇਖਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਮਹੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਆਹੋ मैंने खत्म हो गया, हम तो टूट गया ना। ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੁਣ। हाँ ए स्कूल मैं पहली पास की थी। ਹਾਂ ओके जी, बहुत अच्छा लगा। ਹਾਂ और कोई नहीं, all the shop will be the rag work. I think इधरों ही निकलना आपको। दूसरा है सुनो, गली रामनाथ पटवा इधर से आएगी। हम यहाँ पे रह के गए हैं जहाँ पे तुम रह रहे हो। हम देख रहे हैं हमारी जगह पे कौन रह रहा है। Look, this is the place we entered. अंदर जाके देखो। हाँ, come on, I'll show you. देखो, there was all ऐसे सारे शौचालय होते थे रवि, ऐसे सारे शौचालय होते थे। Look, तुम्हारे क्या बोले भाई? एक बार आगे के लिए ये छोटी जगह है। ये 3631 तो नहीं है। ये जो रामनाथ पटवा गली में 3631, यही है। तो ये तो कैसे ज़्यादा बन गया आगे, पहले तो खुला था अहाता। अच्छा, एक सीढ़ियाँ भी जाती थी यहाँ से, ये वाली नहीं और जाती। नहीं ये तो एक्चुअली अभी बनी है। एक पर, ये हाँ वाली ये है। सीढ़ियाँ हैं, पता क्या हाँ है? जी। आजा रवि देखो, वी स्टेड इन दिस, इसके सर के ऊपर कोने में हम रहते थे। अच्छा अच्छा। इसके ऐसे चढ़े ना, इस तरफ लेफ्ट साइड में हम रहते थे। मेरा ये 10 साल मैंने यहाँ गुजारे हैं। अच्छा तो हम वही देखने के लिए बच्चों को दिखाने आए हैं कि हम किस हालत क्या जगह पे रह रहे थे। और अच्छा 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 बच्चों ने पता ही ना पहाड़गंज कैसा है, अच्छा अच्छा। तो उन्हें मैं दिखाई। लुक एट दिस सीढ़ियाँ, इसके ऊपर मैं जैसे सीढ़ियाँ चढ़ती है ना, एक घर इस तरफ एक घर इस तरफ है। हाँ जी हाँ जी हाँ इस जी। वाले घर में हम रहते थे, इसमें कोई और रहते थे, राम सर नहीं, वो बेंगलोर चले गए थे। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उनके फिर आगे अमृत कौर कोई और बंदे आंटी रहे। का पानी वानी ला, पानी वानी नहीं पिलाओ, चाय नहीं, पियो है। नहीं, चाय बना लो। नहीं बेटा नहीं। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਆ। नहीं माय बेबी। नहीं पता, हीरा दे एक बुजुर्ग जी लेडी वो नहीं पता। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੇਟੀ इतना ते बरियाम कोर कोई लेडी रहती ਹਾਂ थी, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ओ मेरी मदर दे दादी। ओना दे टाइम दे गया। मतलब एजी का जमाना गुजर गया। जब हम तो पाकिस्तान के बाद ना, तो मैं 1 साल की थी जब यहाँ पे आई। ਇਧਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। समझ आ गया। ਇਧਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ। Look at this boy. Very smart boy. हाँ हाँ, smart boy. ਆਓ Flankies ਬੈਠੋ, ਚਾय दे। ਪਿਓ ਹੈ। बाबू ओ दी गल फ्लैंकिश करो फ्लैंकिश। ਆਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਮਿਲਣ। आपको ये गली बिल्कुल याद वैसी ही होगी। मुझे तो नंबर तक याद था। नहीं सही कह रहे हैं 36 से 31। नहीं मेन आपको गली की लोकेशन भी अभी एज इट इज होगी जो 50 में थी। लोकेशन कोई चेंज नहीं दिख रहा होगा। नलका चेंज यहाँ पे हुआ था। कहाँ है? अब वो नलका वो आ गया। बस नलका अरे वो भी जयगैल यहाँ- जी ने कहा थे नल के पानी भर देसी आके। हाँ इधर नल का बाहर ये रहा। कहने यहाँ के पे लिए टूटी थी हम हटनी यहाँ है। से भर के पानी लेके अपने घर में सीधा ऊपर चढ़ते। अभी शिफ्ट करा है इसको। We didn't have water. We used to carry the water from here to that place. काफी Then दूर है get it, फिर ऊपर। Yeah, it was quite far. वही तो माता जी के फिर कहते हैं ना भाई, इतनी बाल्टियाँ लेके जाते हाँ जी, थे। हाँ जी, हाँ जी। नलका तो यही यहाँ था। सुबह 4 बजे से लाइन लग जाती है। यहाँ अरे हाँ, 5 ये बजे है। नलका आता था और 7 बजे चले जाता था। तो आप आंटी सोचिए कि कैसे लेते होंगे। आंटी जी की भाषा अभी भी नहीं बदली है।
जैसी पहले थी आज भी वैसे ही है। बिल्कुल जी, वही यहाँ क्या है तो वहाँ कहाँ बिल्कुल जाएगा। आंटी बिल्कुल। तो यहाँ पे मुझे पता है हाँ जी, यहाँ हाँ जी, से हम हाँ। कपड़े बिल्कुल। मतलब पानी की बाल्टी भर के भर के इतना दूर कपड़े जाकर के धोना। अंदर- कई बार यहाँ पे कपड़े धोते थे इधर बैठ के। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ। कुछ देर के बाद ओए बेटा ओए, नहीं, नहीं। भाई साहब बाकी सब कुछ जैसे का वैसा ही है, कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं बदला, वैसे का वैसे ही है। थोड़े बहुत मकान ऊपर नीचे हो गए हैं, हाँ। जैसी गलियां थी आज भी वैसी हैं। वैसे ही है 50 साल से तो हम देख रहे हैं यार कि हम भी बड़े हो गए इस गली में। 50 साल ही हो बस गए। 70 71 72 के हम हो रहे हैं तो क्या थैंक यू एवरीबॉडी। This was an incredibly humbling experience for me. I always talk about how I grew up in the hood and how I didn't have this and have that, but I never experienced not having direct access to running water. I never experienced not having access to electricity, and I am incredibly grateful for the sacrifices my family made in order for me to get to America. The most painful part about this trip was seeing kids that looked like me, might have had the same name that I have, but just didn't have access to running water or electricity, and I have done nothing to earn that advantage in life. But let me be clear, there is beauty in Paharganj. Extended families live together, work together to raise their children. Small business folks and artists are some of the most skilled and talented in the world. Folks work hard, take care of their parents, and don't complain. They find happiness everywhere. These kids and families will invite you in their homes and give you their shirts off their backs.